orange is the most favorite fruit of winters and we love to have it. So that's why I'm making this dessert using oranges. And I have created the layers. पुडिंग में कोई बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं होती, सिंपली कस्टर्ड है और उस कस्टर्ड को मैंने फ्लेवर देने के लिए ऑरेंज का इसको मैंने डिसॉल्व किया. Here you are, friends. I have made this orange layered pudding with cream, or I'm going to taste it. This is perfectly looking yummy pudding. Amazing. It has all the flavor of orange. Crunch of the biscuits and yummy cream dessert. ऑरेंज के सीजन इसको डिसॉल्व किया ऑरेंज जूस में. इतना सा ऑरेंज जूस डाला है जिसमें वो डिसॉल्व हो जाए और इसमें ऑरेंज बर्ड्स का जबरदस्त सा एक टेस्ट आ रहा है और ऑरेंज फ्लेवर कस्टर्ड तैयार हो गया. दिस इज योर क्वाइट ओन इनोवेशन. यू कैन डू इट. इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन मेक सिंपल कस्टर्ड यूजिंग वनीला एसेंस, राइट. तो कस्टर्ड के बाद मैंने उसको फ्लोई रखा था. जो ज्यादा पुडिंग्स में कस्टर्ड यूज होता है वो बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होता और बहुत फ्लोई भी नहीं होता. एंड देन यू नो हाउ आई हैव क्रिएटेड द लेयर. जेली बनाई थी, ऑरेंज फ्लेवर की जेली ली थी हमने और उसकी सर्विंग बोल्स में उसकी लेयर्स लगा दी थी. बॉटम पर लेयर लगाई थी. देन आई पोर्ड ओवर द कस्टर्ड और कस्टर्ड रूम टेम्परेचर का था. इसके बाद मैंने डाला क्रम डाला बिस्किट्स का जो कि मैंने प्रोसेसर में कर लिया था. उस क्रम के ऊपर आई प्लेस द ऑरेंजेस स्मॉल पीसेस रिमूविंग द स्किन एंड सीड. अब ऑरेंज का जो जूस था दैट विल सॉफ्टन बिस्किट्स बीनीथ and the top layer is of the cream. The cream I beated whisked with the help of whisker electric beater and you can create and और ये whipped cream थी, इसमें शुगर वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती. And finally eventually I topped this with orange little pieces creating this mouth watering dish for your Sunday brunch, for your Sunday dinner or for your guests. So Kasuar Lifestyle के चैनल पे if you are newcomer I welcome you. If you